Hey there, welcome to this new episode. In this lesson, we will learn another 5 cool words by awesome mnemonics and depictions. Trust me, they are really cool. We will also learn how to use them in different sentences. So let's begin. The first word is edifice. Edifice. It means a building, especially one of imposing appearance or size. You can link this word in your mind with ate a face. Edifice ate a face. Okay, now see in this depiction, the great Kong ate the north face of the edifice. Ate the face of the edifice. You can see here एक बड़ा सा monster है जो कि एक बहुत बड़ी building का एक portion खा रहा है. Sentence examples: The construction of the edifice led to another, and New York City became a skyline of enormous skyscrapers. The Taj Mahal may not be the largest edifice ever constructed, but surely it is one of the most imposing in the world. Spider-Man easily scaled the edifice. The next word is efface. Efface. It means to rub away or to remove something intentionally. इसका एक मतलब ये एक और भी है, एंड पे बताती हूँ. लिंकिंग वर्ड इसका हो सकता है erase. Efface it itself means to rub away and linking word is erase. Okay, depiction देखें. How to efface a face by erasing it. ठीक है, एक बोना दूसरे बोने को मिटाने की कोशिश करे, हैंड्स अप वाली फॉर्म में. Sentence examples: We came upon a cemetery by the sea. Many of the handstone inscriptions had been effaced by the ravages of time, but we could make out many that were well over 200 years old. सेमेट्री कहते हैं जहाँ पे ऐसी प्लेस जहाँ पे डेड बॉडीज़ किसी भी चीज़ की पुरानी जो बॉडी हो वो दफन हो. इंस्क्रिप्शंस कहते हैं लिखाई को, किसी चीज़ के ऊपर लिखने हुए को कहते हैं. To assure that he left no clues, the thief effaced his fingerprints from the stolen car. बड़ा कोई शातिर किस्म का चोर था नाजरीन व हाजरीन, उसने उसके बाद सारे के सारे फिंगर नहीं मिटाए बल्कि फिंगर प्रिंट्स मिटा दिए. It was hard to make out the old coin state because it had been effaced over time. अम्मी मुझे नानी ने 5 रुपए दिए हैं. लेकिन ये लगेंगे नहीं पुत्री क्योंकि इनके ऊपर डेट effaced हो चुकी है. Another meaning of the word efface is to behave in a modest way and treat the good things that you have achieved as if they are not important, because either you do not have much confidence about them. तो ये थोड़ा सा जो आप इनकसारी का हद से ज़्यादा मुजाहरा जब करने लगे हैं तो वो भी efface के टर्म में आ जाता है. खुद को मिटा रहे हो, मिटाना ही हुआ somehow. The next word is egalitarian. Egalitarian. What does it mean? Advocating the doctrine of equal rights for all citizens, or a person who adheres egalitarian beliefs. ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ egalitarian, what does it mean actually? तो इसका मतलब होता है believing that all people are equally important and should have the same rights and opportunities in life. सही. अब ज़रा इसी को माइंड में रखते हुए आप डिपिक्शन देखें. लिंकिंग वर्ड है इसका द गर्ल आई एम मैरियिंग. वर्ड क्या था? egalitarian. द गर्ल आई एम मैरियिंग. द गर्ल आई एम मैरियिंग इज़ एन egalitarian. ये बंदी ये समझती है, बंदी कहूँ या इसको मैं क्या कहूँ वैसे, बंदी. अब बंदा कहूँ तो वो जेंडर चेंज हो जाता है, लेकिन बंदी बहुत छोटा सा एल्फिन सा वर्ड है कि इसके ऊपर फिट नहीं होता. एनीवे, इसका ये मानना है कि सिर्फ लड़के लड़कियों को नहीं उठा सकते बल्कि लड़कियां भी लड़कों को उठा सकती हैं. इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो उसने उठाया हुआ है. जितना इसका साइज़ बताया हुआ है इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. Sentence examples: The communists preached an egalitarian philosophy, but in the end they were the same old fascists the world has known through the ages. काफ़ी political terms आ गई हैं. Communism basically कहा जाता है
जहाँ पे हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी है काम करने की इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस। एंड फैशिज्म पे जो बिलीव करते हैं कि नहीं एक लीडर होना चाहिए और वो सबको डिक्टेट करे लाइक डिक्टेटरशिप। मार्टिन लूथर किंग्स egalitarian beliefs inspired many. Martin Luther King was a true egalitarian. He preached for equal rights for all citizens. The next word is elapse. Elapse. It means to pass or go by. Specifically, if you're talking about time, you can link this word with collapse. Elapse, collapse. Okay, see this example. Ted ran the mile in the elapsed time of 3 minutes 47 seconds and then collapsed. रोजा सी मनो ना मनो टेड का। वैसे ये तो गिरा है, मुझे समझ नहीं आया जो पीछे वो शगुफा टाइप इंसान खड़ा है वो क्यों इस कदर कोलैप्स हो रहा है। Time elapses slowly when someone is waiting for important news. बिल्कुल ऐसे ही होता है। 10वीं का रिजल्ट आना था, उफ, न रात कटे और न सुबह हो। 2 years elapsed before they were to meet again, but all the time Jonathan knew Annette was the girl he was going to marry. इन्ना कोई कॉन्फिडेंस देखो। Only 6 seconds elapsed after that play because an incomplete pass stops the clock. Next and the last word is elfin. Elfin. कितना कोई cute नाम है elfin. It means small and sprightly, mischievous or fairy-like. कोई छोटा सा जो चीज़ होती है प्यारी सी नाजुक सी उसको कहते हैं elfin. Link can be elephant. वैसे आई वुड से लिंकिंग वर्ड अगर आप एल्विन वाली मूवी आपने देखी हो तो छोटा सा एल्विन है एंड इट इज सो मच क्यूट, तो आप एल्फिन और एल्विन ज़्यादा आई थिंक सो रिलेटेबल। Anyway, an elfin elephant is a strange sight to see. देखो ज़रा, एक तो स्ट्रेंज साइड सो सी है एल्फिन एलिफेंट को देखना, ऊपर से वो दूध पी रहा है, वो भी मानो बिल्ली का। मानो बिल्ली की अक्खां देखो, ओए होए, एंड ना छोटा सा हाथी। Jane is very small and has a magical elfin charm about her until she starts to sing. Then she sounds like a bullfrog in the pond. तबाही किस्म की बेइज्जती हुई है जेन की। वो नहीं होता आप बहुत खूबसूरत हैं जब तक बोले ना ताड़ी मेहरबानी, वो कमर्शियल है। The entire family had an elfin quality, like little people who belonged in the land of Lilliputians. आई डोंट नो अबाउट इट। The elfin character of Tinkerbell in the Walt Disney movie Peter Pan will always be remembered by generations of Disney fans. छोटे छोटे से थे सब उसमें, प्यारे प्यारे। That's all for today. If you liked the video, hit on the like button and don't forget to subscribe my channel to just stay tuned. Till the next dose, take care. Bye bye. Allah Hafiz.